My dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में दो और स्लाइड्स पेश कर रहा हूँ। ये तारीफी स्लाइड है कि जिसका हवाला ये है कि मैं पहले दो स्लाइड्स आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बारे में था। कैसे वो शॉर्ट सर्किट होता है, क्या लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी बिना पर होता है, और उसकी क्या प्रिवेंटेशंस हैं, ये सब इन स्लाइड्स में पेश किया जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इन स्लाइड्स को देखें, सुने, और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ज़रूर। My dear viewers, today once again I am presenting you two slides with reference to the short circuit and electrical hazards. How the short circuits happen, what are the faults in our daily life if we don't care for that and short circuit happens, and even the fire emits there. So I request you to please go through these two slides also, which are coming up. Thank you very, very much. And once again, I request you to please subscribe, like, and share my YouTube channel. The link of my YouTube channel is in the last slide of this. Thank you. व नाज़रीन, इस स्लाइड में चंद बातें की गई हैं। एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उसका पहला हिस्सा इस स्लाइड में पेश किया जाएगा, दूसरा हिस्सा अगले स्लाइड में पेश किया जाएगा। तो एक तो ये कि पहले भी मैंने कहा है और आपसे दरख्वास्त की है कि आप अपने घर की वायरिंग ज़रूर चेक करवाते रहा करें। ख़राब तारों को फ़ौरन ठीक करवाते रहा करें, उन पर जो लोड है उसको ज़रूर चेक करवाया करें। इसके अलावा अच्छे मेयार के सर्किट ब्रेकर्स जो आपके मेन बोर्ड में, स्विच बोर्ड में होते हैं, उनको ब्रेकर्स जितने भी हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों। घटिया क्वालिटी के ब्रेकर होंगे, उन पर लोड पड़ेगा, आग लग जाएगी, खुदा ना करे, स्पार्क होगा वहाँ पर, और उसकी वजह से जब मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लगेगी तो वो पूरे घर में या पूरी बिल्डिंग में फैल सकती है। So we have to take care of all these things what I am discussing in Urdu. And now the safety measures part 1 is to be discussed in this slide, where we are going to see that damaged wiring should be and immediately to be replaced with good wiring. At the same time, we have to avoid overloading of any appliances or any wiring. Install the proper circuit breakers in your main switch board, main electric board, so that there should not be any risk of sparks. If you will use the substandard circuit breakers, it may be harmful for you, for your life, for your property. Also, get the expert and learned and technical technician to check your electrical appliances and electrical wiring. Thank you very much. स्लाइड में हम एहतियाती तदाबीर का पहला हिस्सा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब ये आखिरी स्लाइड है और इसमें दूसरा हिस्से का जिक्र किया गया है कि गीले हाथों से किसी आलात को, किसी तरह के बरक़ी आलात को हाथ ना लगाएं। पानी से चीज़ों को, अपने बरक़ी आलात को और वायरिंग को बचाएं। बच्चों को बिजली के ख़तरनाक और खुदा न करे हादसात होने के बारे में तरबियत दें, तालीम दें, उनको समझाएं कि कैसे अपने आप को महफूज रखना है। जो आलात ख़राब हो चुके हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हैं, उनको फ़ौरी तौर पर हटा दें, उनको ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा बिजली का लोड ज़्यादा बरक़ी आलात पर ना डालें। और जैसा कि पिछले स्लाइड में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्किट ब्रेकर्स जो आपके मेन बोर्ड में लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के,
उनको बेहतर से बेहतर कंडीशन के लगवाएं। हंगामी सूरत हाल की सूरत में ना सिर्फ कि आप खुद अगर कहीं आग लगी हुई देखें, बल्कि जो पड़ोसी हैं वो राहगीर जो हैं वो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड वालों को इत्तला दें। इसके अलावा मैं और एडिशन करूँगा, मैं और इजाफा करूँगा कि अगर खुदा न करे कोई ज़ख्मी हुआ है उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करें, फर्स्ट एड दें। Now, safety measures part 2 will be discussed in this slide. At the same time, I would like to request you that don't touch the appliances with wet hand and keep protected your children from the electrical hazards. If there is any emergency, immediately call the fire brigade. Even the neighbors, the pedestrians, the passerbys, they are supposed to call the fire brigade. If there is anyone injured, first aid is given and then shifted to hospital to that person immediately. Now, this is the last and final slide of this series. I once again request you to please subscribe, like and share my YouTube channel at least to your 5 friends, your neighbors, your family. It will be a great help to me also, as at the same time you can get the benefit of spreading these valuable and knowledgeable slides to your friends and to your relatives, for which I will be thankful to you. The link of my one YouTube channel, which is called the informative channel, is at bottom of this slide. As at the same time I am uploading the link of my other YouTube channel, which is to learn engineering. Both the YouTube channels links are there. You like whatever you like, you click that and subscribe, like and share my YouTube channel to as many as people you can. I will be thankful to you. Thank you very much.